I think we can start now. It's 10:28. So, general features of liver disease or liver pathology. When we say liver, I have slightly changed the sequence of the topics which was given in Robbins. The reason being, I think that this is more helpful to understand. Subsequently, we have another lecture for jaundice. We can do the revision, but at least before doing the entire before doing the entire liver, I think we should have some understanding of what jaundice is. So I have slightly changed the sequence of the topics which was there. So when we say features of the liver disease, and the features actually depend that either there is a damage in the parenchyma, that is the hepatocellular damage. ठीक है, कि liver का parenchyma क्या होगा, उसका hepatocytes, ये hepatocytes का damage है या cholestasis है. ठीक है, cholestasis का क्या मतलब है, cholestasis का मतलब है for some or the other reason liver is forming bile, but actually there is decreased secretion of bile by the biliary system. Okay, so I repeat, the general features of liver disease or presentation of the liver depend on either the damage is at the level of hepatocytes, that is parenchyma, or the damage or there are features, a clinical presentation due to decreased secretion, decreased excretion of bile. Okay, so when there is hepatocellular damage, there are increased transaminases. ठीक है, हमने increased transaminases क्या पढ़े थे, ALT और AST. ठीक है, तो क्या होगा कि अगर hepatocellular damage होगा तो transaminases होंगे. अगर हम broadly देखें कि transaminases जो hepatocellular damage किन conditions में हो रहा था, viral hepatitis. ठीक है, वहाँ क्या हो रहा था, virus is directly, most of the viruses are directly cytopathic to the liver parenchyma. ठीक है, तो क्या हो रहा था, viral hepatitis में. Drugs, autoimmune, non-alcoholic steatohepatitis, metabolic disorders like hemochromatosis. So these actually directly affect the hepatocyte itself. तो इसकी वजह से क्या होता है, there are increased transaminases. यानी अगर मैं पेशेंट के लैब टेस्ट कराऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, there is increase in the AST and ALT. Then cholestasis. Cholestasis में क्या है कि bile की production तो almost is normal, but actually there is decreased excretion of bile by the liver. So what happens? There is increased alkaline phosphatase and bilirubin. Bilirubin बढ़ जाएगा और क्या बढ़ जाएगा, alkaline phosphatase जो कहाँ से release होगा, bile duct की epithelium से. And there are also increased transaminases in something. जैसे life is not that simple. Life, the medicine is not like mathematics कि आपने डिजीज को कह दिया कि भाई आपने सिर्फ ट्रांसअमाइनेजेस इंक्रीज करने, कोलिस्टेटिक डिजीज को कह दिया कि आपने सिर्फ अल्कलाइन फॉस्फेटेज रिलीज करने. तो एवरी टाइम इट इज नॉट लाइक दिस. व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट sometimes there is overlap of both, यानी transaminases भी increase होंगे, alkaline phosphatase भी होगा, but the level of transaminases is far more as compared to alkaline phosphatase in diseases like viral hepatitis. And on the other side, in cases of diseases like primary biliary cirrhosis, which basically affect the bile duct system, there is far more elevation of alkaline phosphatase, but there are also some increase in transaminases. ठीक है, तो बहुत दफा overlap भी होता है, लेकिन जो alkaline phosphatase अगर thousands में होगा तो transaminases hundreds में होंगे in cases of diseases like gallstones and biliary cirrhosis, which is basically affecting the bile duct system. इसके comparison में जब viral hepatitis होगा तो transaminases thousands में होंगे और alkaline phosphatase आपके पास hundreds में होगा. तो there may be both, लेकिन एक दूसरे को जो है override, एक चीज जो है दूसरे को override कर रही होगी. ठीक है, so we cannot take it like maths कि हर वक्त जो है ना अगर किसी को hepatitis है तो उसकी सिर्फ transaminase, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो चीज dominate कर रही होगी. That is why the clinic the experience comes. ठीक है, तो क्या हो गया कि हेपेटोसेलुलर डैमेज की वजह से होंगे, वो इन डिजीजेस में होगा, कोलिस्टेसिस की वजह से होंगे, जो which will be there in diseases like gallstones जो bile duct system को, biliary system को obstruct कर रही है, primary biliary cirrhosis, sclerosing cholangitis, pancreatic carcinoma या biliary carcinoma, etc. Good.
जनरल फीचर्स ऑफ लिवर डिजीज क्या होते हैं? लिवर डैमेज हुआ तो क्या चीज हो सकती है? लिवर फेलियर हो सकता है। लिवर फेलियर में या तो either it is acute or it is chronic. There are definitions for the acute and chronic liver failure which I will give you for assignment because there is no point of discussing acute liver failure because these are all time periods. So you guys can go through it. I'll give you as assignment. कि liver failure क्या होता है कि either there is either it is acute liver failure or it is chronic liver failure. But once the liver failure is there, clinically, the patient present with portal hypertension, ascites, portosystemic shunt, hepatopulmonary syndrome, and definitely with jaundice. Okay, I again repeat what happens whenever a disease, either actually the liver is affected by a number of diseases like metabolic, viral, drugs, etc. क्योंकि क्यों liver में इतने सारे diseases होते हैं? क्योंकि liver has a major role in the metabolism of different drugs, in the metabolism of different toxins. तो क्या होता है कि liver जो है इन बहुत सारी चीजों में इफेक्ट होता है. तो डैमेज क्या होगा? either it is acute or chronic. We will go through the causes के acute के causes क्या होते हैं, chronic के क्या होते हैं. acute usually drugs से होता है और hepatitis like hepatitis A, hepatitis E, etc. So whenever the liver failure is there, there is either acute liver failure or chronic liver failure. But clinically patient कैसे present करेगा? Patient will present with jaundice. ठीक है, हमने जब हम we were doing infectious disease, we said that jaundice is actually the hallmark of the liver disease. Jaundice के साथ present करेगा, portal hypertension के साथ, ascites के साथ, portosystemic shunt के साथ, hepatopulmonary syndrome के साथ और portopulmonary hypertension के साथ. Although these syndromes are far more common in chronic hepatitis, which is more common, which is insidious in onset as compared to acute liver failure. Okay, and one interesting thing is that liver will remain functioning and will remain try to compensate till at least 80 to 90% parenchyma is gone. Now, starting with portal hypertension. Portal hypertension क्या होता है? When there is increased resistance to portal blood flow. ठीक है, portal blood flow क्या होता है? This is a blood which is from the gastrointestinal tract. It is a venous blood which is from the gastrointestinal tract is carried to the liver. So what happens? There is increased resistance to portal blood flow. ठीक है, आप ब्लड वेसल्स को ऐसे ले लें जैसे पाइप्स होती है. ठीक है, एक लिवर एक सॉलिड ऑर्गन है, वहां पे पाइप से आ रहा है ब्लड फ्रॉम दिस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जिसको हम स्ट्रेंथनिंग सर्कुलेशन भी कहते हैं. The blood is carried by the portal vein from the gastrointestinal tract through the portal vein to the liver. आपको क्या है? It is like एक पाइप. ब्लड वेसल्स क्या है? पाइप की तरह है ना. अब हम कह रहे हैं कि पोर्टल फ्लो की पोर्टल ब्लड फ्लो में रेसिस्टेंस हो जाती है जिसको हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन. अब ये रेसिस्टेंस कैसे हो सकती है? ये रेसिस्टेंस हो सकती है अब जैसे पाइप जा रही है, मैं पाइप के ऊपर कहीं पे अपना पैर रख दूं तो क्या होगा? पाइप में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी. जब पाइप में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो क्या होगा कि आगे प्रेशर बढ़ जाए. ऐसा ही होता है ना कि पाइप में पाइप में अगर पानी जा रहा है, जाते आपने गाड़ी का टायर उसके ऊपर कर दिया या आपने अपना पैर पाइप के ऊपर रख दिया तो क्या होगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा. तो अगर पाइप में कोई सुराख होता है तो वो क्या होता है, उससे एकदम वो सारा जो ब्लड है स्टार्लिंग फोर्सेस, जिसको मेडिसिन में स्टार्लिंग फोर्सेस कहते हैं, स्टार्लिंग फोर्सेस चेंज होंगी और प्रेशर से वो सारा जो ब्लड है या पानी है उस पाइप से बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो जब पोर्टल ब्लड फ्लो में रेसिस्टेंस में ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ हो सकती है? एट 3 साइट्स. आइदर इट इज प्री हेपेटिक, इंट्राहेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक. ठीक है, I again repeat कि what is portal hypertension? ये सारे basic concepts है बेटे. I know it's very difficult to understand, but you need to know it कि blood flow में obstruction है. blood flow में obstruction कहाँ पे हो सकती है? जहाँ पे portal vein enter हो रही है liver में, जिसको हम कहेंगे pre-hepatic, यानी liver में enter होने से पहले. Then intrahepatic inside the liver and post-hepatic when this portal vein is taking blood to the heart to get it oxygenated. ठीक है, तो प्री हेपेटिक कॉजेस क्या हो सकते हैं? अगर कोई भी वेन कब ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है? जब उसमें थ्रोम्बोसिस हो गया या उसकी नैरोइंग हो गई है एज अ रिजल्ट ऑफ फाइब्रोसिस और देयर इज मैसिव स्प्लीनोमेगाली. ठीक है, स्प्लीनोमेगाली है तो वहीं से प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाएगा कि वो
ब्लड को नहीं वहां पर इट विल कॉजेस द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो। पोस्ट हेपेटिक कॉजेस क्या होंगे? blood from liver by the portal vein is carried to the heart। लेकिन अगर और नेचर में क्या मैकेनिज्म है कि प्रेशर ऑन द लिवर ऑन द साइड ऑफ द लिवर इज मोर एज कंपेयर टू हार्ट, तभी एंटी ग्रेविटी ब्लड ऊपर फ्लो करते हैं। लेकिन अगर फॉर सम ऑफ द रीजन हार्ट में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट में प्रेशर इंक्रीज कब हो सकता है? हार्ट में प्रेशर इंक्रीज हो सकता है अगर वहां पे कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो गया। कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्या चीज होती है कि कार्डियम उसकी हार्ट की फ्लेम हो गई है और उसने सारी कंस्ट्रिक्शन कर दी है, तो क्या होगा? हार्ट पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट मोर ब्लड इज नॉट एबल टू एंटर इनटू द हार्ट, so it will lead to portal hypertension। राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया। राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया। हार्ट इज नॉट right sided heart is not able to pump that blood into the pulmonary circulation for oxygenation। As a result, the pressure rises and additional blood from the portal circulation cannot enter into the heart। इसको कहते हैं हम right sided heart failure। I don't know either you guys have gone through respiratory system। respiratory system में बहुत एक famous question होता है कि core pulmonale क्या होता है, ठीक है? So we can do it at the end if we have time। सो हेपेटिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ठीक है? तो ये पोस्ट हेपेटिक कॉजेज हो गए। लेकिन लिवर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन इज इंट्रा हेपेटिक, यानी लिवर के अंदर से जब वो वेन गुजर रही है तो उस पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। और मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? सिरोसिस। व्हाट सिरोसिस इज? सिरोसिस इज when the normal liver parenchyma is started replaced by the fibrous tissue and regenerative nodules। ठीक है? लिवर जब डैमेज होता है, लिवर इज लाइक अ स्टेम सेल। liver is one of the few cells in the body which have a capability to regenerate। liver को जब इंजरी होती है तो क्या होता है? हमारे हार्ट में रीजनरेशन की कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है? इसीलिए मायोकार्डियल फंक्शंस आर फार मोर डेंजरस एंड कैन नॉट सस्टेन लाइफ विदाउट इट, क्योंकि वो रीजनरेट नहीं करता। लेकिन लिवर की सेल की क्या कैपेबिलिटी है? this is like a stem cell which has a capability to regenerate। तो लिवर जब डैमेज होता है तो रीजनरेट करता है। लिवर डैमेज हो रहा है ड्रग से, हेपेटाइटिस से, सॉरी इंफेक्शियस हेपेटाइटिस से, फॉर वट एवर रीजन, जब भी वो डैमेज होता है वो क्या करता है? रीजनरेट करता है। जब वो रीजनरेट करता है तो वो क्या, क्योंकि जाहिर है लिवर अब ऐसा तो रीजनरेट नहीं करेगा जैसा द नेचर हैज मेड इट, सो देयर इज हैप्पैजार्ड रीजनरेशन। जब अंदर सेल्स की हैप्पैजार्ड रीजनरेशन हो रही होती है या फाइब्रोसिस हो रहा होता है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिरोसिस। सो जब सिरोसिस हो रहा होता है, अब यू कैन जस्ट इमेजिन अबाउट इट कि पोर्टल वेन है जो लिवर में से गुजर रही है, वहां पर रीजनरेशन हो रही है, फाइब्रोसिस हो रहा है, ठीक है? ये ऐसे ही है जैसे एक पाइप है वो गुजर रही है, उसके अराउंड अगर बहुत सारे आप पत्थर रख देंगे भारी तो क्या होगा? वो आहिस्ता आहिस्ता पहले थोड़ी सी कम बंद होगी और उसके बाद ज्यादा बंद होनी शुरू हो जाएगी। तो सेम इज इन द केसेस ऑफ सिरोसिस के जब वो पोर्टल वेन लिवर के अंदर से गुजर रही है, इफ there are regenerating nodules, there is fibrosis which is called cirrhosis। So actually there is external pressure on the portal vein which causes rise in the portal pressure which is called portal hypertension, and this is the most common cause of portal hypertension। Hope you get it। Less frequent causes of intrahepatic portal hypertension are schistosomiasis, massive fatty change, diffuse fibrosis and granulomatous diseases like sarcoidosis, like fungus, like leishmaniasis, etc। ठीक है? इंट्राहेपेटिक कॉज में पहली तो बात ये याद रखिए कि पोर्टल हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन कॉज है सिरोसिस, और सिरोसिस के जो लेस कॉमन कॉजेज हैं वो शिस्टोसोमियासिस वगैरह है, लेकिन द मोस्ट कॉमन इज सिरोसिस। अब पोर्टल हाइपरटेंशन होती क्यों है? व्हाई द पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप्स? ठीक है? पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ रेसिस्टेंस टू पोर्टल फ्लो एट द लेवल ऑफ साइनोसॉइड्स। ठीक है? अब हमें इतनी सारी पैथोलॉजी करनी है तो फॉर मी इट इज नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू द हिस्टोलॉजी स्लाइड्स। ठीक है? यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट कि साइनोसॉइड्स की क्या होता है कि ब्लड फ्लो को देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन एट द लेवल ऑफ साइनोसॉइड्स। वो क्यों होती है वो मैं आपको बताती हूँ। और दूसरा रीजन क्या होता है? इंक्रीज इन द पोर्टल फ्लो और हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन। ठीक है? कि यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया। ठीक है? तो पोर्टल हाइपरटेंशन क्यों होगी? पोर्टल हाइपरटेंशन is can develop for the two reason. One reason is
resistance to portal flow at the level of sinusoids. And why this develops, I'll discuss. Another reason for the portal hypertension is increase in the portal flow. वहाँ जब blood enter हो रहा है, अगर पहले वहाँ पे 10 लीटर enter हो रहा था, तो अब वहाँ पे 20 लीटर enter हो रहा है. तो इसको हम क्या कहते हैं? Hyperdynamic circulation हो गई है. Hyperdynamic circulation क्यों हो गई है? We discuss कि क्या क्या conditions हो सकती हैं. Cardiac failure हो रहा है, blood stasis हो रहा है, body renal failure में जा रही है, retention हो रही है body में fluid की, तो इन सब में क्या चीज हो जाएगी? Hyperdynamic circulation हो जाएगी. Okay, so there's increase in the portal flow. So for the portal hypertension, there are two reasons: resistance to the portal blood flow and increase in the portal blood flow. Up, just the brief description that why there is resistance to portal flow at the level of sinusoids. There is contraction of the vascular smooth muscle. अब ये vascular smooth muscle कहाँ से आया? ये vascular smooth muscle वो smooth muscle है which is at the periphery of sinusoids and myofibroblasts. ठीक है, अब ये contraction क्यों हो रही होती है vascular smooth muscle and myofibroblasts? इनकी contraction इसलिए हो रही होती है because there is decrease in the nitric oxide or NO and increase in the level of endothelin. These all lead to contraction of vascular smooth muscle and myofibroblasts, which increases the pressure. And there's destruction of the blood flow by scarring and formation of parenchymal nodules. ठीक है, एक और रीजन क्या होता है पोर्टल हाइपरटेंशन का, जो मैंने आपको बताया था कि सिंपली पाइप है, उसका अगर आप बाहर से दबा देंगे, वो रीजनरेटेड नोड्यूल के अंदर से गुजर रही है, उसको बाहर से प्रेस कर देंगे तो उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. Just comment over here, if you go through Robbins, there is lot of detail. Okay, at least the points which you have taken it out are at least you should know these points. Okay, you don't need to go through the, if you go through the Robbins, there is a lot of detail. I had subtracted that because I know that a lot of the things are going on and it is very difficult to retain all that, but I request, I have taken these points from Robbins, but at least you should know these main points. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ कि इसको थोड़ा समझ लें कि पैथोफिजियोलॉजी पोर्टल हाइपरटेंशन की क्या है. दो रीजंस हैं, रेसिस्टेंस टू ब्लड फ्लो और इंक्रीज इन द पोर्टल सर्कुलेशन. इंक्रीज इन द पोर्टल सर्कुलेशन आपको मैंने बताया कि किन कंडीशंस में हो सकता है कि बॉडी में किडनी इज रिटेनिंग मोर ब्लड, बॉडी इज अंडरगोइंग कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, so there is hyperdynamic circulation which is causing portal hypertension. और resistance to blood flow क्यों होगी? The further explanation is there is contraction of the vascular smooth muscle cells and myofibroblasts. And why this happens? Because in cases of liver failure there is decreased nitric oxide and increased endothelin. ठीक है, ये दो चीजें हैं जो अगर इसको याद कर लें तो बहुत अच्छा है. And the disruption of the blood flow by scarring and formation of parenchymal nodules. Once the portal hypertension developed, ठीक है, liver failure हो गया, portal hypertension develop हो गई. अब what could be the possible consequences of portal hypertension? ठीक है, just take a deep breath and I again repeat कि क्या हुआ? Portal hypertension develop हो गई. अब once the portal hypertension is developed, what could be the possible consequences? Yeah, how what are the clinical syndromes associated with portal hypertension? ये portal hypertension खुद क्या क्या कर सकता है? क्या क्या कर सकता है? Ascites, formation of portosystemic shunts, congestive splenomegaly, and hepatic encephalopathy. Just the schematic representation of the same. क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये लिवर है, लिवर में cirrhosis हो गया. ठीक है, we have gone through that the cirrhosis is the single most common cause of portal hypertension and it is an intrahepatic cause. यहाँ से ये blood था, ठीक है, जो सारा gastrointestinal tract से आ रहा था, this blood has to enter into the liver, but as a result of cirrhosis the pressure over here increases. ठीक है, ये जो पाइप ब्लड लेकर आ रही थी, venous blood from the gastrointestinal tract, ये अंदर यहाँ पर इसमें obstruction हो गई. तो क्या हो गया? जब जैसे पाइप है उसको मैंने एकदम से बंद कर दिया. अगर आपको याद हो लिवर की हिस्टोलॉजी में साइनोसॉइड्स में there is space between the endothelial cell, तो क्या होगा? जब मैं बंद करूंगी तो वो जो nature has given small spaces which have increased as a result of decreased nitric oxide secretion and increased endothelin secretion. What happens? एकदम से gush से जो blood है वो
उसमें से जो सीरस फ्लूइड है वो बाहर आएगा, जिसको हम कहेंगे ascites. Okay, so what ascites is? Ascites is the serous fluid accumulation in the peritoneal cavity. क्या चीज हो जाएगी? ascites हो जाएगी. What ascites is? Ascites is the accumulation. ठीक है, यहाँ पे ब्लड फ्लो की obstruction हुई तो क्या हुआ कि जो उसमें से serous part होगा उसका, which is rich in albumins because albumin is produced by the liver, वो सारा एंटर हो जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में, जिसको हम कहते हैं ascites. उसके अलावा फोटोसिस्टमिक शंट्स. फोटोसिस्टमिक शंट्स क्या होती है? फोटोसिस्टमिक शंट्स आर प्लेसेस वेयर देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द पोर्टल एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. अब क्या होगा, क्योंकि पोर्टल सिस्टम में प्रेशर इंक्रीज है, और वी हैव गॉन थ्रू इट इन फिजियोलॉजी दैट जहां पे प्रेशर इंक्रीज होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्टालिंग फोर्सेस, the pressure from the blood from the high pressure will move to the lower pressure side. अब क्या हुआ है? उल्टा हो गया, पोर्टल सिस्टम में प्रेशर इंक्रीज हो गया है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में कम है. तो क्या होगा, यहाँ पे फोटोसिस्टमिक शंट्स बॉडी में कहाँ होती है? इसोफेगस में होती है, रेक्टम में होती है, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट ऑफ लिवर पे होती है, और पेरी अम्बिलिकल होती है. तो इन सब एरियाज में there is reverse blood flow from the portal to the systemic circulation. As a result, इसोफेगस में इसोफेजियल वेराइसिस डेवलप हो जाएंगी, रेक्टम में हेमोरॉइड्स डेवलप हो जाएगी. यहाँ पे अम्बिलिकस में जब ये वेसल्स प्रोमिनेंट होती है तो इनको कहते हैं कैप्यूट पेडिसी, which is one of the hallmarks of liver disease. इन तीनों में ये जो पोर्टोसिस्टमिक शंट्स डेवलप होती है, which is most dangerous, the most dangerous are esophageal varices, because once the pressure keep on increases in the systemic circulation, it is not made to sustain that much pressure. As a result, these varices rupture and lead to massive bleeds, and that bleed is one of the major causes of death in cases of liver failure. ठीक है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन हुई. पोर्टल हाइपरटेंशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? ascites, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो सारा फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ सीरस फ्लूइड एंटर इनटू द पेरिटोनियल कैविटी. ascites हो गई है, फोटोसिस्टमिक शंट्स प्रोमिनेंट हो गई है, एज अ रिजल्ट पेशेंट को वेरिसेस होंगी, हेमरॉइड होगा, एक्सेट्रा. क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज है तो स्प्लीन से बहुत सारा ब्लड इज नाउ नॉट अगेन, pressure is say 100 over here and 50 on the spleen, so for spleen it is not possible to push the blood over here. As a result, there is splenomegaly, और splenomegaly को हम कहते हैं congestive splenomegaly. क्यों congestive कहते हैं? क्योंकि blood वहाँ पे congestion हो रही होती है, blood वहाँ पे accumulate हो रहा होता है. अच्छा, इसमें ये एक टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाए जब भी लिवर डिजीज होती है. Liver, one of the function of liver disease is one of the function of the normal liver is metabolism of estrogen. As a result, what happens, if the estrogen is not metabolized and the level of estrogen increases, the spider angiomas develop. ठीक है, यहाँ पे डायलेट हो जाएंगे, वैसे इनको स्पाइडर एंजियोमास कहते हैं. और उसके अलावा क्या होगा, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगी, गोनेट्स का साइज डिक्रीज हो जाएगा, और मेल जो पेशेंट्स होंगे उनमें गायनेकोमेस्टिया होगा बिकॉज ऑफ hyper estrogenism, because estrogen is not because there is a lot of estrogen, so it causes the hypertrophy and hyperplasia of breast tissue. So what is the definition of ascites? हमने देखा ascites is the accumulation of excessive fluid in the peritoneal cavity, और ये clinically कब evident होती है? जब when at least 500 ml of the fluid has accumulated in the peritoneal cavity. This is called cirrhosis. ठीक है, अगर आप ascites की टाइप्स देखेंगे तो कहीं आपने ये भी पढ़ा होगा कि hemorrhagic ascites. Hemorrhagic ascites क्या होती है? When blood start entering into the peritoneal cavity. Blood usually accumulated in cases of malignancies, in cases of trauma, और जो liver disease है, it usually present with cirrhosis ascites. Cirrhosis ascites में less than 3 gram per dl of the protein होता है, लेकिन इस प्रोटीन के largely क्या होता है? Albumin होता है. ठीक है, और एल्ब्यूमिन क्यों होता है? क्योंकि लिवर इटसेल्फ इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ या फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एल्ब्यूमिन. तो जब वो जो फ्लूइड लिवर से एक्सेल आउट कर रहा होगा into the peritoneum, it has lot of albumin, so that as a result it is high in albumin. So if the report of detailed report of a ascitic fluid comes and it says there is increase in the albumin level, it means that this is a serous fluid, there is no RBCs in it, this is most likely secondary to liver disease. लेकिन अगर इसी में न्यूट्रोफिल्स आने शुरू हो जाएंगे तो इसका क्या मतलब होगा
कि इसको superimpose bacterial infection हो गया, which is pretty common with the liver disease. Pathogenesis of ascites. Pathogenesis of ascites, again, like the pathogenesis of portal hypertension, this is a pretty complex topic with a lot of detail in the textbook. But at least again the same के जो specific points मैंने mention किए हैं वो जरूर कर लो, ठीक है. Sinusoidal hypertension, ascites का क्या reason है? Sinusoidal hypertension. Sinusoidal hypertension का मैंने आपको simple सा reason बताया कि पानी की पाइप है, उसमें obstruction हो गई है और उसमें कहीं छोटे छोटे leaks थे. यहाँ पे वो लीक्स क्या है? वो लीक्स है जो एंडोथेलियल सेल्स के बीच में साइनोसॉइड में by nature those are there for the excretion of the products from the liver. तो वो जो साइनोसॉइडल हाइपरटेंशन होती है तो वो सुराख वहाँ पे ऑलरेडी होते हैं. जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो as a result of the imbalance in the stalling forces, the fluid is expelled out of the liver. That is called sinusoidal hypertension. So there are different reasons for ascites. One is the sinusoidal hypertension. Another is albumin maintains osmotic balance, and once the liver is out of function, what is going to happen? It is not able to produce much albumin. As a result, there is reduced albumin. Osmotic pressure कम हो जाएगा, तो fluid will easily move out of the liver. उसके बाद एक और ये टर्म है percolation of hepatic lymph into the peritoneal cavity. ये क्या चीज होती है कि thoracic जो duct है उसकी capacity है कि वो कितना lymph लेकर जा सकती है maximum to the lymphatic system. It is about 1 liter per 24 hours. But in cases of liver failure, this fluid increases to say 20 liters per day. So the lymphatic system is not able to take up the entire fluid to the lymphatic system. As a result, they are entered to the peritoneal cavity, जिसको हम कहते हैं percolation of hepatic lymph. Then is the strengthening vasodilation and hyperdynamic circulation. ये strengthening पहले तो बात है कि strengthening circulation क्या होती है? What is strengthening circulation? The blood system या part of the circulatory system, the part of the circulatory system which is confined to the gastrointestinal tract, that is the one which is regulated by superior inferior mesenteric artery, etc. That part of the circulatory system is called strengthening the strengthening circulatory system. So strengthening vasodilation की वजह से और hyperdynamic circulation की वजह से there is more fluid. As a result, the fluid comes out of the vessel. ठीक है, vessel की capacity है, जब वहाँ पे vasodilation होगी, बहुत सारा fluid होगा, तो fluid will move out again as a result of difference in the stalling forces, and that accumulate in the peritoneal cavity, which is called ascites. अब यहाँ पे जब liver disease होती है तो strengthening vasodilation और hyperdynamic circulation क्यों होती है? Again, the reasons are there is decreased production of nitric oxide and increased production of endothelin. As a result, these two factors you need to memorize, because these are the two factors which causes the strengthening circulation and has also role in portal hypertension. So basically these three are the causes of ascites in cases of liver failure. Ascites खुद क्यों होती है? Ascites होती है basically secondary to portal, is one of the consequences of portal hypertension, but there are other reasons for ascites as well. Photosystemic shunts, which we have already gone through. Photosystemic shunts कब develop होती है? When there is rise in the portal system pressure. The flow is reversed from the portal to systemic circulation. Dilation of collaterals होती है, that is the venous bypasses develop. और photosystemic shunts अगर rectum में है तो they will manifest as hemorrhoids. If these are there at the esophagogastric junction, these are called varices. And varices is rupture of the varices is one of the leading cause of death in patients of chronic liver disease. And if the same is developing in the falciform ligament of liver, then it is periumbilical abdominal wall collaterals, which is caput pedici, which is the hallmark of portal hypertension. ठीक है? अगर किसी का आपने लिवर का पेशेंट देखा है उसमें कैप्यूट पेडिसी है, इसका मतलब है कि वो it is secondary to portal hypertension. Splenomegaly. Splenomegaly क्यों होगी in patients with liver disease? क्योंकि congestive splenomegaly होती है as a result of back pressure, because there is increase in the pressure in the portal circulation. Fluid accumulate in the spleen. It causes the development of the
causes enlargement of the spleen, और जब लिवर स्प्लीन की enlargement हो जाएगी तो वहाँ पे hematological abnormalities हो जाती है जिसमें thrombocytopenia होता है और pancytopenia होता है. Thrombocytopenia का क्या मतलब हुआ कि platelets कम हो गए. तो अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज का है तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ हैविंग ब्लीडिंग. ब्लीडिंग का चांस उनमें ज्यादा होता है. क्यों ज्यादा होता है? एक तो स्प्लीन में गैली हो गई होती है, इसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं. और दूसरा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे जो विटामिन के डिपेंडेंट coagulation factors हैं, those are activated in liver. So once those are not activated, so there is increased chances of bleeding. Now stigma of the liver disease. Stigma of liver disease क्या होते हैं? हाथ पे palmar edema हो जाता है. Palmar edema का again यही reason है कि increased estrogen होता है, vascular dilation हो जाती है जिसकी वजह से जो palms होते हैं मिल्क को reddish मिलते हैं. क्लबिंग होती है, ल्यूट्रिन्स कॉन्ट्रैक्चर होता है, ल्यूकोनिकिया होता है, फ्लैपिंग ट्रेमर होता है. फ्लैपिंग ट्रेमर होता है once the hepatic encephalopathy is there. हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कब होती है? जब अमोनिया वगैरह एक्सक्रीट नहीं हो रहा था तो इट कॉजेज हेपेटिक एनकेफेलोपैथी. उसके बाद अपर बॉडी में क्या होता है? जॉइंटिस होता है, स्पाइडर एंजियोमेटा होते हैं, गायनेकोमेस्टिया होता है. गायनेकोमेस्टिया का हमने रीजन अभी ऑलरेडी किया. स्क्रैच मार्क्स क्यों होते हैं? क्योंकि जब कोलिस्टेसिस हो रहा होता है तो इचिंग होती है, प्लूराइटिस होता है एंड दैट लीड टू द कि पेशेंट बहुत ज्यादा इचिंग कर रहा होता है, बॉडी पे स्क्रैच मार्क्स होते हैं. अगर आप किसी लिवर डिजीज की पेशेंट का एब्डोमेन देखेंगे तो वहाँ क्या मिलेगी? एसाइटिस मिलेगी, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली मिलेगी, कैप्यूट मेडिसी मिलेंगे. कैप्यूट मेडिसी क्यों होंगे? पोर्टोसिस्टमिक सर्कुलेशन की वजह से. हेमरॉइड्स मिलेगी और करेक्टल एग्जामिनेशन एंड स्मॉल टेस्टिस. अगेन स्मॉल टेस्टिस क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में मेरे पास असाइनमेंट किस दिन होता है. जिस दिन मेरे पास असाइनमेंट होगा आई विल गिव यू दिस स्लाइड and you have to tell me the reasons के liver के patients में से spider angiometer क्यों होंगे, small testis क्यों होंगे, etc. Jaundice which is actually the hallmark of the liver disease, hallmark of the liver damage, hallmark of the liver pathology. यहाँ पे ना आपने 3 टर्म सुनी होंगी, जॉइंडिस, इक्टेरस और कोलिस्टेसिस. ठीक है, ये तीनों टर्म्स की डेफिनेशन डिफरेंट है. When there is yellow coloration of skin, it is usually called jaundice. When there is yellow coloration of sclera, it is called icterus. And when the bilirubin rises because of obstruction in the biliary tract and there is brown pigmentation of the liver tissue itself, it is called cholestasis. Okay, so where does the bilirubin comes from? Bilirubin 11 o'clock. So bilirubin comes from the breakdown of hemoglobin unconjugated. Then what happens? Once the hemoglobin is break down, unconjugated bilirubin is transported to liver, bound to the albumin because it is insoluble in the water. Then what happens? Once inside the liver, it get conjugated by the with glucuronic acid with the help of the enzymes and then secreted into the bile and also excreted through ileum and colon. I again quickly repeat what happens. Bilirubin is released from the breakdown of hemoglobin. It is in the unconjugated form, insoluble in the water, so bind to albumin and brought to the hepatocytes. In the hepatocytes, it is conjugated with glucuronic acid with the help of enzymes and secreted in bile. So, and then extrusion occurs through the bile and through the ileum and colon. Now, jaundice कब होगा? When the body started retaining this bilirubin and it is at the level of 2. अब कब bilirubin, कब body में bilirubin increase हो सकता है? Either there is increased production of bilirubin, there is decreased hepatocyte transport. ठीक है? बिलिरुबिन कब होगा? जब बॉडी जॉइंटिस कब होगा? जब बॉडी में बिलिरुबिन होगा, बिलिरुबिन ज्यादा हो जाएगा. When the bilirubin rises, when there is increased production of bilirubin. Increased production of bilirubin कब होगी? When there is more breakdown of the cells, because where the bilirubin is coming from, it is coming from the breakdown of hemoglobin. So there is decreased transport, to hepatocytes. या क्या हो गया कि there is impaired conjugation, उसकी conjugation नहीं हो रही. या there is impaired excretion of bilirubin or impaired delivery of bilirubin into the intestine. ठीक है?
ये जो these two यानी bilirubin बंद तो गया, conjugate भी हो गया, but still it is not excreted from body. This condition is called cholestasis. This refers to the later two where the impaired, later two where there is impaired excretion and obstructive jaundice. इसको हम कहते हैं obstructive jaundice. Obstructive jaundice का मतलब है कि jaundice इसलिए हो रहा है क्योंकि bilirubin तो बन गया है और conjugated है, but it is not able to excrete from body. Okay, so ये क्या चीजें हो गई? Impaired excretion of bilirubin and impaired delivery of bilirubin into the intestine. Other causes of increased bilirubin are increased production, decreased transport, and impaired conjugation. What is the difference between unconjugated bilirubin and conjugated bilirubin? What do you think which is more dangerous? We can keep it for assignment. And more than one mechanism may be involved. जैसे hepatitis है तो hepatitis में हो सकता है आपको कुछ bilirubin conjugated मिले, कुछ unconjugated मिले. ये ऐसा ही है जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में समझाया था कि जब hepatocytes damage होते हैं by the say hepatitis B, बेसिकली ट्रांसोमाइनेसेस इंक्रीज होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कोलिस्टेसिस का पार्ट भी होता है. इसी तरह इन दोनों की कॉम्बिनेशन हो सकती है. ठीक है, मेडिसिन इज नॉट लाइक मैथ्स कि जिसमें आप क्लियरली दो चीजों को स्केल रख के सेपरेट आउट कर लें, लेकिन डेफिनेटली एक में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होगा और एक में अनकॉन्जुगेटेड. दिस क्वेश्चन that which one is more dangerous, unconjugated or conjugated, this we have kept for the assignment. Okay, so this is basically the repetition of the slide before. Jaundice occurs when the equilibrium between the bilirubin production and clearance is disturbed by one of the following mechanisms: excessive extrahepatic production of bilirubin. ठीक है, bilirubin की production ही ज़्यादा हो गई है. Reduced hepatic uptake, impaired conjugation, decreased hepatocellular excretion, and impaired bile flow. Now, ये जो मैंने अभी previous slide पे अगर if we have a live class, I would ask कि which of these produces unconjugated and which of this produces conjugated. मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो causes हैं इसमें से कौन से हैं जिनमें out of these 5 which will produce conjugated hyperbilirubinemia and out of this which will produce unconjugated hyperbilirubinemia. ठीक है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, otherwise this will going to be a very difficult concept to understand. Out of these 5, which condition will produce conjugated hyperbilirubinemia and which condition will produce unconjugated hyperbilirubinemia? ठीक, so अब unconjugated hyperbilirubinemia इनमें से कौन सी conditions में होगा? Excessive production of bilirubin, reduced hepatic uptake, impaired conjugation. All these first 3 will produce unconjugated hyperbilirubinemia, and these 4 and 5 will produce conjugated hyperbilirubinemia. This is the table from Robbins, and basically it is the elaboration of the same. You can go through the causes: excessive bilirubin production, hemolytic anemia. Reduced hepatic uptake कब होगा? When drug interfere with the membrane carrier system. Impaired कब होगा? Physiological jaundice है. Yeah, there is deficiency of the enzymes like UGT1 activity, which is Stickler-Richard syndrome, and as a result, bilirubin cannot be conjugated. Or conjugated hyperbilirubinemia कब होगा? In the congenital disorders like Stevens-Johnson and Rotor syndrome, there is deficiency of canalicular membrane transporters or impaired bile flow. मतलब conjugate तो हो गया, लेकिन उनके bile flow में obstruction है, तो body is not able to get out. तो बेसिकली मेरा आपको मशवरा ये है कि यहाँ पे जाहिर है we cannot go through each and every cause. क्या करें, पहले इसको पढ़ें इस स्लाइड को. ठीक है, इसमें देखिए कि jaundice किन किन रीजन से होता है. ये 5 reasons है. Out of these 5 reasons, first 3 will cause unconjugated hyperbilirubinemia and 4, 5 will cause conjugated hyperbilirubinemia. Then go to this slide. Sorry. Then go to this slide. और फिर सोचिए कि देखिए एक्सेसिव के क्या कॉजेस थे, रिड्यूस अपटेक के क्या कॉजेस थे, impaired bilirubin. This is not rocket science. You guys can go through the table and you need to go through the table क्योंकि इसमें जो rare syndromes होते हैं ना, Stickler-Richard वगैरह, ये in the right scenario these can come in MCQs. Even they can be asked in the MCQs of postgraduate level, like when you are doing FCPS part 1 or PAP etc. लिवर आता है यार एग्जाम में. Hereditary hyperbilirubinemia, as I said, that the Stickler-Richard syndrome, Stevens-Johnson, these are pretty
These are the pretty not in. You should not know them in detail, but at least a part of that should be known to you, so that you are able to do MCQs if the major stuff comes. इसका ये syndrome है unconjugated hyperbilirubinemia कब होगा जब bilirubin की conjugation नहीं होगी bilirubin की conjugation नहीं हो कब नहीं होगी when there is deficiency of this particular enzyme which is UGT1A ठीक है और वन और टू क्रिटिकल रिजार्ड सिंड्रोम में डिफरेंस ये है कि इसमें एंजाइम एब्सोल्युटली एब्सेंट होता है जबकि हियर देयर इज डिक्रीज देयर इज गिलबर्ट सिंड्रोम जिसमें अगेन देयर इज एंजाइम इज देयर बट देयर इज डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ दैट एंजाइम ओके सो कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिnemia के कॉजेस में हमने ड्यूबिन जॉनसन पढ़ा था उसका रीजन क्या होता है कि कॉन्जुगेट तो हो गया हाइपरबिलिरुबिन लेकिन बिलियरी सिस्टम इज नॉट एबल टू एक्सक्रीट इट because of the deficiency of MRP2, that is multi-drug resistant protein 2. What happens in Rotor syndrome? That is decreased hepatic uptake. This is a pretty complicated table, and I know that it is difficult to memorize it. लेकिन at least ये बताओ कि critical Rijard syndrome क्या होता है? Critical Rijard syndrome is basically there is either absent or decreased activity of UGT1, which is responsible for conjugation. Gilbert syndrome का क्या होता है कि there is enzyme is there but it has reduced activity. Then Dubin-Johnson syndrome and Rotor syndrome. Cholestasis. Cholestasis, we have already gone through the cholestasis of bilirubin 1 gap, but this is a type of obstructive jaundice. So as a result of obstructive jaundice, as a result of obstructive jaundice, there are clinical features like pruritus, xanthema, elevated serum alkaline phosphatase, and gamma glutamyl transpeptidase. जब भी obstructive jaundice हो रहा होगा, whenever there is obstructive jaundice, on lab reports there are there is elevation of these two enzymes, that is elevated alkaline phosphatase and gamma glutamyl transpeptidase, which will come in thousands. Accumulation of bile pigment होता है ठीक है bile क्योंकि बन रहा है तो start accumulating within the hepatocytes, fat degeneration होती है, and what you can see here is this is a normal hepatocyte and there is brown pigment depositing, which is cholestasis. Photomicrographs of the same. Pink are the hepatocytes, brown color is the cholestasis. These are the rare syndrome. Jaundice की वजह से emergencies क्या हो सकती है? अगर acetaminophen toxicity की वजह से acute liver failure हुआ है, permanent liver failure and ascending cholangitis. These are the jaundice emergencies. Hepatic failure, one of the hallmarks of the hepatic failure is cirrhosis. So what actually cirrhosis is? Cirrhosis is when the normal liver is replaced by the regenerating nodules of hepatocytes and fibrous tissues. So there are different manifestations: bridging fibrous septa, parenchymal nodules, and disruption of architecture of the entire liver. We keep on doing it when we are doing alcoholic hepatitis. So don't worry if you have problem with the cirrhosis, but at least the rest of the stuff should be understand. यहाँ पे एक और चीज याद रखिए, this is normal liver. This is liver with fibrosis. So the prime cell which is responsible for the activation of fibrosis is stellate cell. ठीक है, ये identify हो गया कि stellate cell, with the normal function of the stellate cell is the storage of vitamin A. But in cases of liver failure, there is activation of this cell and it transforms into myofibroblasts and produces lot of fibrosis. तो बस slide पे ये याद रख लें कि which are the cells which are responsible for cirrhosis. These are the stellate cells which transform into myofibroblasts as a result of production of these factors, that is endothelin, tumor necrosis factor, platelet-derived growth factor. These cells transform into myofibroblasts. So this is the gross liver. ऊपर से cirrhotic liver कैसा नजर आएगा क्योंकि liver is replaced by nodules and fibrosis, so it has a nodular appearance. So again the same. Clinically patient present करेगा anorexia, weight loss के साथ, और अगर cirrhosis हो गया the patient can end up in liver failure, portal hypertension. ठीक है, portal hypertension का most common cause क्या था? Cirrhosis, and then hepatocellular carcinoma के अंदर. So microscopically there are 4 stages: liver cell necrosis, inflammatory cell infiltrate, fibrosis, and nodular degeneration. Nodular regeneration. It is not possible to go into the details further, and I think that this is enough. This slide is most important कि मैं आपसे पूछूं कि what are the common causes of cirrhosis, but we keep on doing this slide as we move forward in the module.
because alcohol, viral hepatitis B, C, primary biliary hemochromatosis, Wilson, etc., autoimmune, which will be next lecture, these all causes cirrhosis. So when the module ends, then I expect that you should know all the causes of cirrhosis. Complications क्या हो सकती है cirrhosis की? Portal hypertension, and we know that portal hypertension can lead to variceal bleed. Splenomegaly will lead to low platelets, ascites, encephalopathy, uh, spontaneous bacterial peritonitis. As I already told, that once ascites develop, there's a great chance to have superimposed infections, and then hepatorenal syndrome.